that spirituality 101, basic fundamentals, are we are not our body, we're not our story, we're not our history, we're not the identity, which obviously means we're not our name. I mean, if I'm not this, then surely I'm not what you call it. And yet, a name has a very powerful impact upon us. Every time we meet someone and we say, oh, my name is so-and-so, or every time someone calls you by that name, it's a reinforcement to you of who they think you are, and a reinforcement of who you are presenting to the world as. Now, there's no names that aren't nice, whether they're names from India that have beautiful meanings, names from the West that we don't usually have meanings. I remember when I first came to India and people would say, oh, my name is Jyoti. It means light. Or my name is Vivek. It means the power of discrimination. And I would think, wow, how nice to be able to actually have a meaning to your name. In America, almost nobody's names mean anything unless you go to the dictionary and you find some very, very obscure definition. But even if it's a nice name that has a nice meaning, like light, or the power of discrimination, or beauty, there's something very different and very deep about having a name that reminds you you are a spiritual being. And our spiritual names remind us of that. Spiritual names tend to be names of the divine, or they tend to be names of divine qualities. So whether it's Krishna or whether it's Karuna, the names that get given are names that when you say, my name is, it's not just, this is what you can call me. It's a constant reminder, I am. I am divine. I am an embodiment of compassion, of love, of divinity. And so I think a spiritual name is very, very beautiful and very powerful. And I would certainly recommend anyone who's having thoughts about it to do it. Because while on the deepest level we are not the identity at all, that's a very difficult place to get to. It's something we may know intellectually, but we don't actually know it really in our hearts, really in our existences. So along the way, as we are walking the path of spirituality, learning dire, I'm not the body, I'm not the identity, I'm not the history. At least along the way, have an identity ki jab bhi aap naam batate hain, naam sunate hain, ya naam sunte hain, it reminds you of your divine qualities. So it's a beautiful tradition. It's something I love and I always recommend to people. Before taking any of the other questions that came in advance, if anyone here has a question, just raise your hand. Yes. Paap kya hai? Wonderful. She's asked, Paap kya hai? It means, what is sin? In the Hindi language, the word Paap is what we would call sin. We speak about Paap and Punya, sin and merits, good deeds, bad deeds.
Western religious traditions, there's a belief that the core of who we are, this is especially true in the Christian tradition, there's a belief that the core of who we are is sinful due to the fact that we come from sin, and that we engage in our religious and spiritual practices in order to attain salvation, to be saved, quite literally, from our own sinful self. In Hinduism, we don't believe that. In Hinduism, we believe that the core of who we are is divine, is pure, is perfect, because we have been created not just by the Creator, but of the Creator. That sin is actually ignorance. Paap is not because you are a sinful person. It's not that you are a sinner. It's in that moment, your power of wisdom, power of discrimination, was overcome by Maya, overcome by ignorance, overcome by illusion. And you lost sight of the truth. थोड़ा सा समय के लिए आप भूल गए कि आप है कौन. And in that moment of ignorance, in that moment of forgetting, you did something. You acted out of lust, greed, ignorance, ego. These are the manifestations of that forgetting. When we think we are the body, we are the story, we are the history, we are the identity, well, then we get lost in it. And then we get angry, we get jealous, we have grudges, we're resentful, we have competitions. These are all symptoms of ignorance. If I know that I'm not this body, that I'm not my bank account, I'm not my career, then what to be jealous of? Right? Someone's bank account's bigger than mine. So what? It only is an issue in my mind when I self-identify with that bank account. Someone's clothes are nicer than mine. They're more expensive than mine. Someone is better looking than I am. They have more followers on social media. They're funnier. They're smarter. Well, it only creates a problem when I identify as this being. When I identify as this being, then I feel jealous, then I feel competition, then I feel anger, I feel regret, or I hold grudges against people. How did you do that to me? How dare you? I stay hurt. In those, I act. Karma to karte rehte. We keep acting. When those actions are done in ignorance, they become sinful. Because we're acting out of lust, out of greed, out of ego, out of anger. To chahe humne kisi ko tappar mara, chahe we stole something, chahe we harmed somebody in a different way, chahe we cheated, maybe we lied. But all of what we did was done out of ignorance. So you can think of Paap not as who you are. It's that which happened through your actions at a time when you had forgotten who you really are. So you are not a sinner. But गलती से, अज्ञान से, अविद्या से,
something happened. And this is why we do whatever we can to increase our gyan, our vidya, our wisdom, our knowledge, our understanding. Because jo karma ka phal hai, well, you still have to take it. Even though who you are is divine and beautiful and full and it only was ignorance, fear to be. If when I'm angry, I throw a rock up in the sky, I'm so angry, I just throw that rock up. Well, I throw it so high that by the time it starts to come down, I'm no longer angry. But that's not going to stop the rock mid-flight. It's still going to come down. And it's still going to come down just as hard and conk me on the head as if I had stayed angry. So we do our spiritual practices. We come to the gurus, we read scripture, we come to satsang, we introspect, so that we have that wisdom. Taki humse tu ye galtiyan na ho. That you would call Paap. So that we stop having to experience the fruits of that karma. And we can live in peace. And live in joy. होगा लेकिन संदीप जी आपके पास माइक है ना दे दीजिए मैडम Shri Vedvyasji is a great sage. After giving 18 Puranas, Srimad Bhagavatam, and many more scriptures, somebody asked him one very simple question. The same question you asked. It means the question is always there. It's not just thousands of years ago people wanted to know about what is sin. No? Even today also, people are very curious. पाप क्या है? पुण्य क्या है? What is life? How to lead that life? नहीं? When you are leading that life, then you are thinking about Paap and Punya, good and bad. And a very simply and simplifying way he gave that answer, because the guy who was asking the question, he was a farmer, being in the jungle or woodcutter. He went there, very simple. अब उसको कोई philosophy तो बतानी नहीं थी, सीधा सीधा बता दिया. अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्. अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्. अष्टादश पुराणेषु. In Ashtadash Puran, Vyasasya Vachanadyo, there are two things he has said so beautifully. And simplifying everything. He said, Papaya Parapidinam. Paropakara Punyaya. Helping someone is the merit. And Papaya Parapidinam. Hurting someone is sin. Very simple. किसी को दिल ना दुखाओ, किसी को चोट ना पहुंचाओ. जब जब आप किसी को चोट पहुंचाते हैं ना, आप उसको नहीं पहुंचा रहे, उसके भीतर कोई बैठा है. ये मान के चलें आप उस परमात्मा को चोट पहुंचा रहे हैं. सबके भीतर परमात्मा है. जब किसी को चोट पहुंचती है ना, उस चोट से जो दर्द पैदा होता है, उससे जो कर्ष पैदा होता है, पीड़ा पैदा होती है. जीवन पीड़ा देने के लिए नहीं, जीवन प्रेरणा के लिए था. होना तो ये चाहिए कि किसी की पीड़ा मेरी प्रेरणा बने, लेकिन हम किसी को पीड़ा दें तो समझ लीजिए कि हमने अच्छा काम नहीं किया. ये लाइफ जीने का तरीका नहीं है. एक महात्मा से किसी ने जंगल में पूछा, व्हाट इज लाइफ? उसने कहा, लाइफ इज व्हाट यू मेक इट. बोलो जीवन कैसा है? बोले जैसा बना लो वैसा है. चाहे इसको स्वर्ग बना लो, चाहे इसको नरक बना लो. बोलो जीवन कैसा है?
जैसा बना लो वैसा है। ये अंदर का जो जीपीएस है ना, वो सब बता देता है, मत करो, डोंट बी सिली, डोंट डू इट, डोंट हर्ट समबडी। लेकिन फिर भी हम गुस्से में आके, जोश में आके बोल देते हैं। इसलिए साधना का एक ही अर्थ है, जोश में नहीं, होश में जियो। ये सोच के जियो कि अगर मुझे कोई ऐसा करे तो फिर क्या होगा। फिर अगला क्वेश्चन किया कि पर ये आएगा कैसे। बोले लिव अंडर द शेड ऑफ धर्मा। अंडर द शेड ऑफ धर्मा व्हेन यू परफॉर्म योर ड्यूटीज एंड परफॉर्म योर एक्शंस, उस समय अपने अंदर से आएगा ये धर्म नहीं है। कोई अगर मुझे, धर्म केवल मंदिर जाना नहीं है, धर्म केवल टीका लगाना नहीं है, धर्म केवल पाठ करना नहीं है, बल्कि जो उस पाठ में है ना, उस पाठ को मैं कैसे जीवन में, और यही पाठ है, यही पाठ है। अब जब धर्म के लक्षण की बात आई, उसमें ये बात आई है, धृति क्षमा दमोस्तेयम। धृति क्षमा, बोले धृति माने धैर्य, पेशेंस हो लाइफ में। पहली बात तो पूजा की नहीं की गई है, बात वहां जीवन की गई है। एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स, यू मैटर, योर हैप्पीनेस मैटर, योर पीस मैटर्स, नहीं योर लाइफ मैटर्स। इसलिए उन्होंने शुरू यहीं से किया, क्षमा। दूसरा क्षमा, पहला धृति, बोले जीवन में धैर्य हो, इट्स ओके, इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर कुछ नहीं हो पाया, धैर्य रखो। इसलिए जो सुसाइड करने के रास्ते चल पड़ते हैं, उनको पता नहीं है कि धर्म क्या है। अगर उन्हें धर्म को समझ लिया होता तो वेट करते हैं, कहते नहीं, आई डोंट हैव टू टेक दिस स्टूपिड डिसीजन, हैव टू काम डाउन, इट इज गोइंग टू हैपन, नॉट टुडे, मे बी टुमारो, इवन इट नॉट हैपन, सो व्हाट, डजंट मैटर। तो उसने कहा कि पेशेंस। फिर आया धृति क्षमा, पहली बात तो ये। फिर बोले क्षमा, फॉरगिवनेस, दूसरों को क्षमा करो। क्षमा करने का मतलब ये नहीं है कि इट इज ओके व्हाट अदर पर्सन इज डूइंग, पर क्षमा, फॉरगिवनेस यू नीड बिकॉज यू डोंट वांट टू बी अनहैप्पी इन योर लाइफ, यू डोंट वांट टू हैव अ स्लीपलेस नाइट, यू डोंट वांट टू क्रिएट अल्सर फॉर यू। क्षमा करने का अर्थ इतना कि मुझे आराम से रहना, मुझे जीना है ठीक से, सॉरी करके और फॉरगिव करके, और फिर उसको याद भी नहीं रखना है कि मैंने उसको फॉरगिव किया था। फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव फॉरवर्ड। अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, स्टक नहीं होना है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आई डोंट फॉरगिव समबडी, इसका मतलब ये हुआ कि आई लॉक दैट पर्सन एंड आई हैव द की। इट्स नॉट द पर्सन इज लॉक्ड इन द प्रिजन, आई एम ऑल्सो इन द प्रिजन थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन। इसलिए मुझे फॉरगिव करना है, क्षमा करना है, और यही धर्म है, ये धर्म के लक्षण है। कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, मैं कर्म तो करूं लेकिन कोई एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं। मैं परोपकार तो करूं, पुण्य के भाव से नहीं। वो पुण्य बन जाता है एक अलग बात है, लेकिन मुझे पुण्य मिलेगा इसलिए नहीं मुझे करना है। मेरा तो कर्म है कि मेरा कर्म धर्म बन जाए, और धर्म यही है कि मैं अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीऊं, परिवार के लिए जीऊं, समाज के लिए जीऊं, राष्ट्र के लिए जीऊं, इवन जो मेरे लिए नहीं करता उसके लिए भी जीऊं। बात बन जाएगी, ठीक है। बस टू हेल्प समबडी इज पुण्य, इज मेरिट, एंड टू हर्ट समबडी इज सिन। मुझे क्या बनना है, क्या चुनना है, कैसी मेरी जीवन यात्रा है, मेरी बैलेंस शीट में मुझे क्या भरना है, एंड ऑफ द डे योर बैलेंस शीट विल मैटर, ठीक है ना। बस अपनी बैलेंस शीट में अपने को पाप नहीं भरना है, किसी को दुखाना नहीं है, किसी को चोट नहीं पहुंचानी है। चोट पहुंच जाए तो माफी मांग लेनी है उसी समय, नहीं तो ये खाता अपने साथ जाता है, कुछ नहीं जाता, ये खाना पीना नहीं जाता साथ में। अभी महात्मा जी की बात कर रहा था ना, इतने बड़े थे, जब बाथरूम में गए कपड़े उतारे, कपड़े भी उतरे रह गए और सीधे ही चले गए। नंगे आए तो नंगे ही चले गए। सोचो, कुछ भी तो नहीं जाता साथ में। क्या जाता है, तुमने किसी के साथ प्यार से बोल दिया, उसको याद रहता है नहीं। बस इतना करते रहो, घर से, पहले घर से शुरू करो।
बाहर निकलते हो सकता, ओ हाउ आर यू, यू आर सो स्वीट, ले आओ। घर वाले स्वीट नहीं होते। व्हेन यू गो आउट एवरीबडी बिकम स्वीट। हेलो हाउ आर यू डार्लिंग, अरे भैया अपने को डार्लिंग बना लो, जो घर में उन्हीं को डार्लिंग बना लो। इफ यू आर नॉट जूसी जूसी विद योर ओन फैमिली, if you are not lovey lovey in your own family, don't keep waiting for the hugs in the heaven. Be huggy huggy here. बस यही जिंदगी है। गीत गाते रहो, गुनगुनाते रहो, जिंदगी संगीत है, मुस्कुराते रहो। गीत गाते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, सेवा करते रहो। क्या बनाया आगे? सेवा करते रहो। कवि लोग यहाँ बैठे हुए हैं। काम करते रहो, नाम जपते रहो, सेवा करते रहो, काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। नफरत ना करो, मोहब्बत ही करो। ऐसा कुछ बना लो बस। तुम बदी से बचो, दिल से नेकी करो, दिल से नेकी करो। बस ऐसे बनाते रहो, यही जिंदगी है। साथ क्या जाएगा, नहीं ऐसे बना लो थोड़ा थोड़ा, और क्या। बस यही बनाते बनाते जिंदगी बन जाए। कपड़े कैसे पहनते नहीं, कर्म कैसे करते हैं, बस। ठीक है, ठीक है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड। Have a beautiful, beautiful rest of your evening. It was a very special blessing to get Pujya Swamiji's blessings and grace. Have a wonderful rest of your evening. We will be coming back together for satsang on the